It's a tense situation here at the Gazipur border, the third largest protest site in the last 2 months that we have seen on the borders of the national capital. The Uttar Pradesh police, for the first time, has moved in fact, right onto the stage. The farmers and the police standing right in front of each other. There is breaking news coming in right now. More farmers have ended their protest. Now this seems to be this entire thing spreading across many small protest sites in Uttar Pradesh and other places. Now, what we have been told is the farmers have lifted blockade at Mathura's Bajna, Nojheel area after talking to the IG Agra, Mathura SSP and district magistrate. Remember, the Uttar Pradesh government has already given orders that all protest sites in Uttar Pradesh have to be completely cleared of the protesters. Okay, now Rakesh Tikait once again speaking, ladies and gentlemen. Very important announcement he is making right now. He's saying that the protest site will continue. Even if I am arrested, the protest site will continue. This could lead to a bigger confrontation. One important thing I want to tell our viewers, every single day at this point of time, this used to be the most lively part of the Singhu border. The women right now are not here. Let's listen into Rakesh Tikait. अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी ये थी है कि हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे। इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पे चलने की। हमारे लोग सब यही रहता। इनको रास्ता दे दो। प्रशासन को रास्ता दे दो। रास्ता दे दो प्रशासन को। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, तो रोने लग रहे हैं। ये पहली बार Okay, I will take and I will you to focus, Dinesh, focus on those visuals. There is some sort of a movement which is now taking place. Somebody has been taken off. There is right now, the police is moving on to the other side. Police is completely moving on to the other side where we are standing. They're jumping over the barricades and moving on to the other side. We'll try and to where this entire situation is taking place. I think one of the senior police officers who came here has just jumped over the barricade and has gone on to the other side. It does seem right now like some sort of a farewell speech that Mr. Rakesh Tikait is making as we speak. But what is happening here at this moment is a very tense kind of face-off which is brewing here. Because, at least at 2-3 moments, Dinesh, if we can try and just move forward a little bit, there is also a lot of technical issues which we are facing because of the massive amount of deployment which has been put here. Rakesh Tikait and others have told, in fact, the administration they are ready to court arrest, but so Rakesh Tikait and others are saying that they are ready to court arrest. It's only the administration which, their allegation is that administration initially told them that only they would be arrested. The protest site will be left untouched. Now they are saying that they want to forcefully remove us from the protest site. Let's listen into a few reactions. Bear with me, ladies and gentlemen. I'm trying to make my way to where the entire commotion is going right now. This could result in certain distortion on your screens because of the technical issues that we are facing. But right now, this entire area has become a very, it's just a tense situation. The police came in huge numbers onto the stage. Certain people have been taken there. Police, you can see, are able to see a lot of cameras, a pose of men just surrounding person. What I will do, I will try and move to that side and
and just try and reach there and give you a sense. That's the police, in fact, drone camera also there. We'll try and just see as the police formation is being done here. The police, in fact, standing in large numbers at this moment. So what exactly their next move is going to be, we'll have to try and get a sense from the senior officers. But at least at this point of time, Mr. leading the protest at Gazipur have said that they are ready to court arrest, given the condition that their entire protest site is not removed, it remains intact. You will be able to get a better sense of the protest site from here. And usually is that here protesters are absent today. They are not to be found, and the numbers also not as much as they were usually. So this is the entire protest site as far as the Gazipur is concerned. It goes to about at least at this point of time. Okay, I think there is some reaction from the police officers. We'll try and get you that that reaction. But before that, let me very quickly go across to our senior colleague, National Affairs Editor Rahul Srivastava, who is joining us now. Rahul, the UP police and the administration seems to have made up their mind. They are going to utilize this uncertainty in the farmers' movement post-26 to clear this entire protest site. Ankit, it's a pincer-like movement. The incidents on the 26th and a very clear picture being created by the administration that leaders like Rakesh Tikait were instrumental, and with a sword hanging over about their arrest. One thing is very clear, that the indications from the administration is that once any agitation which has been discredited, there is a sense of disarray among the leadership, and also with an impending arrest of a leader who is leading one front, there is definitely going to be a sense of disarray among the protesters. And I think that advantage the administration is moving in with. It's very clear, as you have been describing, that the police has moved into the territories where it had not for a very long time. The numbers have thinned. And this is not just at the Gazipur border, but at various other areas. Even as far as in Mathura and other areas, where at the highways we had certain blockades, they are slowly being vacated by the farmers. Remember, the farmers who were the cause and the reason behind the protest have actually been duped yet again by the hostile acts of the 26th January. And that is why somewhere the farmers are not feeling that they are going to be part of an exercise. And that is why the administration is feeling emboldened. That emboldened feeling can be felt on borders where you are standing. And in fact, in meetings in the Home Ministry also, one clear indication seemed to be emerging that the advantage has to be pressed in. That in case there are fault lines emerging, there are leaders who are likely to be arrested, and there is a disarray that the administration can utilize. Rahul, stay on with me. Mr. Nasir Hussain, thank you for your patience. But sir, you would understand that this is a very fluid situation that we are reporting out of right now from Gazipur. A quick word from you. The kind of action that we are seeing from the Uttar Pradesh government right now. Rakesh Tikait has even gone ahead and said that he's worried that they will try and use force on his followers. He's now said he's not going to court arrest, which he has initially agreed to. He said if the administration forces him, he'll hang himself. Your comments on what the BJP spokesperson was saying and the situation which is brewing right now. Tagi, I would just like to say that we have heard of something which we oftenly say might is right. Here, the party that is there in power thinks that the might of the union government, the might of the state government is the right path which they have to adhere to. This is what they have been doing. The modus operandi of the Modi Sarkar, which you have seen in the anti-CA, NRC protests also, it is very clear. There will be some protests, there will be some outsider, there will be some person wielding lathis and rods. They will charge, they will create violence, and then the entire movement will be discredited, and then what follows is the action from the government. We have seen people barging in Jawaharlal Nehru University. We have seen a gun-wielding boy roaming around in the campus in Jamia. We have seen 2-3 guys roaming with country-made pistols in Shaheen Bagh.
We have seen what happened in Jafarabad. People from Gazipur and other places were brought in to create mayhem in old Delhi, or Northeast Delhi. This is what we are seeing even on 26th. I just want to ask, who is this? Mr. Nasir Hussain, I'm sorry I have to interrupt you there, sir. I'm sorry I have to interrupt you there because the police who are in fact speaking to Mr. Rakesh Tikait, the officers are speaking right now. Listen in. ये 5 लाख टैक्स मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। टिकैत जी आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक अपने किसान को मैं सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपके साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला? पुलिस को ना धोखा करी। पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हो जाए, ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस वाले यहाँ पर कुल मिलाकर के राकेश टिकैत रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, कह रहे हैं ये आंदोलन नहीं होगा खत्म। कैमरा मैन अजय ठाकुर के साथ कुमार गुलाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। This is where Rakesh Tikait is sitting. What you heard him crying was coming from that very stage. A very, very emotional Rakesh Tikait saying that he's not going to move. He says that this entire conspiracy should refrain the farmers. He will, in fact, hang himself if he's forcefully removed from this position. Ladies and gentlemen, it's all happening here. The police were just about 10 minutes back on this side of the stage. They have now moved back. Rakesh Tikait had said that the agreement was reached that he will court arrest, but they will not remove this entire protest site. Now the police has and the district magistrate has given a clear direction that this entire protest site needs to be removed. Mr. Tikait, who is also being investigated for his role on what happened on 26th January. He's extremely emotional right now. And if the leader of this protest is right now in such an emotional state, you can only imagine if force is used to try and remove them, what could be the result of, in fact, that kind of a movement. But remember, I will still reiterate, it's not the same amount of people in the numbers at Gazipur that we are used to seeing. Right now, continuous stage, is being managed by the senior leaders, all of them announcing, sit down, we are not going to
get into any confrontation. We will talk to the administration on this. But this situation is quite fluid. The road on both sides, on top of this flyover, has been stopped, has been shut right now. Okay, so okay, movement is happening. The farmers are fortifying their position. Announcements being made from the stage. All the tractors and the trolleys which are on below the flyover and all across, they have asked all tractor trolleys to be brought here near the stage. This is going to be, they are trying to fortify this entire area where the senior leaders are sitting. They are asking all their farmer tractors to be brought near the stage and put a protective line around. Ladies and gentlemen, all that we are listening here, despite the assurances right now, all the announcements being made, the situation remains extremely tense at the Gazipur border. Although the announcements are being made that the situation will remain calm, let me just see if we still have Rahul Srivastava. Rahul, the perception battle that was going on 26th, the farmers, after winning the perception battle. Okay. Okay, let me now, in fact, before I go to Rahul, play this report which has been sent by my colleague Ashok Singhal from Aaj Tak. अपनी ड्यूटी का पालन करेंगे। खुद मेरे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र पुन साहब। वीरेंद्र जी, क्या आज खाली करवा के रहेंगे? आपको लगता है खाली हो जाएगा बॉर्डर आज? देखिए सर, हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन जो है ना शुरू से करते आए हैं। कल भी किया था, आज भी किया और कल भी करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और शांति, सेवा और न्याय दिल्ली पुलिस का हमारा मोटो है, उस पर अटल हैं। उसके लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। लेकिन एक किसान जो बैठे हुए हैं, आंदोलनकारी जो बैठे हैं, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि खाली करो आज, और डीएम ने भी कहा है, तो आपको लगता है आज खाली हो जाएगा ये? हमें अपने पॉइंट पर जो है टाइमली ड्यूटी पे बुलाया गया है। जो कार्रवाई करने के लिए हमें आदेश मिलेंगे, हम उसका संपूर्ण और स्वागत करके उसका कार्य करेंगे। अगर वो आराम से खाली नहीं करेंगे तो फोर्सफुली भी खाली कराया जाएगा? ये एरिया है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जरूरत पड़ेगी। वो भी शांति का ही है और मार्ग अपनाएंगे और हम भी शांति से उनके साथ सहयोग करेंगे। नहीं, आप कह रहे थे कि इनको खाली कर देना चाहिए, बहुत दिनों से लोगों को असुविधा हो रही है। ये बट नेचुरल है, क्योंकि जान माल का नुकसान वो हमने अभी पीछे बचाया है। हमने खुद पत्थर खाए, हमने विश्वासघात इनका वो झेला। इन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके समय का पालन नहीं किया, स्थान का पालन नहीं किया। इन्होंने हर वो चीज़ वायलेट की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो हमें लगता है कि इनका जो मंतव्य था वो सही दिशा की तरफ मार्गदर्शित नहीं है और इनको अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, नैतिक जिम्मेदारी ये लेते हुए इनके नेतृत्व का फेलियर है, इन नेतृत्व को अपना एडमिट करना चाहिए अपना फॉल्ट और रिस्पेक्टफुली जो हमारे किसान भाई हैं उनके साथ जरूर अपने निवास स्थान की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अंजना साहब तौर से दिल्ली पुलिस भी तैनात है, यहाँ पर यूपी पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है। पूरी कॉर्डर ऑफ कर दिए इलाके को। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आम पब्लिक आई थी, जो पुलिस के समर्थन में नारे लगा रही थी और आंदोलन खत्म करने के लिए यहाँ पे स्थानीय लोग बोल रहे थे, उनको भी यहाँ से भगा दिया गया, पूरा खाली करा दिया गया। तो पुलिस की पूरी तैयारी है यहाँ से किसानों को खदेड़ा जाए, या तो पीसफुली तरीके से या फोर्सफुली तरीके से। एसीपी भी साफ तौर से कह रहे थे कि इनकी मोरल ड्यूटी बनती है। देखिए, पूरा इलाके को बंद कर दिया गया, जबकि आम दिनों में ये रास्ता खुला रहता था अंजना। और आज देख, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरे किसान यहाँ पे बैठे हुए थे जो कि ऊपर चले गए हैं, एक अलग जगह पर भाषणबाजी की जा रही है। लेकिन यहाँ भी पूरा आपको दिखाई देंगे, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस, यूपी पुलिस भी यहाँ भारी तादाद में है अंजना। लेकिन पूरे इलाके में आप देखिए पूरा सन्नाटा है, अभी एक्शन से पहले का सन्नाटा है। और दिल्ली पुलिस तो साफ तौर से कह रही है कि हमको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, अगर उनको जाना ही चाहिए। लोगों को बहुत असुविधा हो रही है अंजना। साफ तौर से एसीपी वीरेंद्र पुंज ये बात कह रहे थे कि हम जो है जिस ढंग से इनका फेल्यूर रहा है वो उनको मानना पड़ेगा। All right, so that was Ashok Singhal, my colleague from Aaj Tak, speaking to one of the ACPs of the Delhi police. Right now, the announcements were being made from the stage that the tractors need to come closer to the stage. All the tractors need to line up next to the stage, and there is some movement that you are seeing right now. So,
speak. We are showing you these live visuals which are coming in right now from Gazipur border. From the stage, announcements being made that no matter what happens, peace should be maintained, should be confrontation. Players are right now to go to their respective places and but ladies and gentlemen, as Ashok was telling you, from under the flyover, we are right now over the flyover. The situation at the Gazipur border is what there are there is less number of protesters here. This used to be the main place where in the evenings, at this point of time, the most lively place. It is completely now more or less barren and a lot of tense moments as we speak here from the stage. Announcements are being made, and now as we speak, the tractors are moving in as it was announced by the administration. Under this flyover, there are also a number of farmers, tractor trolleys. It's not the same number that we are used to seeing. The Delhi police and the Uttar Pradesh police joint forces are here right now. So what would be, I can hear some tractors in fact coming onto that side as well. We'll move slowly and we'll try and show you as the tractors move in to take the position which has been announced. Usually I will have in our daily, everyday coverage, a lot of women, a lot of children speaking to us. This would be the langar, one of the biggest langars here, where food used to be prepared. A lot of women used to be here. All that today is not visible, is not seen. The tractors, as we speak, are moving in. Dinesh will try and show you. क्या बात बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया। अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए। जिस कॉज के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को? पुलिस को ना धोखा करी। पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हुआ।
ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस वाले यहाँ पर कुल मिलाकर के नरेश टिकैत रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू है, कह रहे हैं ये आंदोलन नहीं होगा।